Good morning, everyone. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So, any questions from what we discussed last in forecasting? So, I think we discussed this diluted EPS, and I think we discussed these examples as well. Working capital भी हो गया था. I think ये भी हो गया था, if I'm not wrong. Cash flow. Have we discussed cash flow? We need to discuss cash flow. I think cash flow. Okay. So, okay. So then this is done. The only part which is pending in this is this hedging part. So, any doubt in this before I go to that hedging part? जो मैंने skip किया था बीच में. Guys, last time, any questions in this? Okay. So, in case no, so earlier we discussed this forex impact. So, we discussed there are three different categories in which this exposure can be divided. So one is transaction exposure, translation exposure, and economic exposure. And so when you do something or any strategy that you undertake with an intent of reducing or managing the risk, that is called as hedging. So it's a strategy to reduce or manage risk is called as hedging. And from an FX perspective, so there are different products which is available, and these are called as derivatives. Derivatives helps to hedge the FX risk. Okay, so let me take an example. So when you buy a new car, you're exposed to risk of theft, accident, etc. You take insurance, correct? To manage these risks. This is as good as a hedge strategy for you. And this insurance is referred as derivative. And without question.
ये थोड़ा heavy रहेगा part. So between today and tomorrow, it will be more complicated, especially for those who do not have an exposure in the past in terms of derivatives. Okay, इसलिए मैंने last के लिए park किया था so that you don't mix up this with the forecasting piece. So probably you need to focus more. कोई doubt है यहाँ पे? Okay, so I take that as no. Now, so there are different derivatives that is available here these days, and so first is future or forward. So the forward or future is an agreement to buy something in future at a future defined date, but at a price agreed today. So let's take an example. So suppose A, which is buyer, and B, which is seller. Enters into the agreement on 2nd Jan, and as per the agreement, A has a commitment to buy. So buy. So suppose rice, 1 kg rice on 1 kg rice on say 2nd Feb at 100 rupees per kg. ठीक भाई, and try and link this with definition. Any doubt till this point? Okay, so in case no, so what does this mean? So say
on 2nd Feb, whether price of rice is 80 rupees or 110, doesn't matter. A has obligation to buy rice from B at rupees 100 per kg. This is what this contract will mean, and this is called as forward or future. And what it does, it protects A from any fluctuation in the price of rice. Hence, A is called as H. So, कोई doubt है तो पूछिए इसमें. So you can go through the example and let me know कोई doubt है तो. Forward or future. In case no. So the important piece that we need to understand that in forward and future, it's an obligation for both buyer and seller. Okay, so which means जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 80 rupees जाएगा, still A has to buy at 100 rupees, or 110 जाएगा, still A has to buy at 100 rupees. So irrespective whether market moves up or down, the buyer of this agreement, parties to this agreement, has to act in accordance with the commitment that they have done in this agreement. Any questions in this? So, and the only difference between forward and future forward is a OTC agreement. What do you mean OTC agreement? Over the counter. Whereas future is an exchange traded contract. Okay. Now, what do you mean OTC? OTC is where the buyer knows who is actual seller and vice versa. But in exchange traded contract, for buyer,
exchange is the seller, and same for the seller. For the seller, exchange is the buyer. See a difference with the forward and future में that the forward becomes an OTC contract where the buyer knows who is the seller and seller knows who is the actual buyer. But in exchange traded contract, the buyer will never know who is the actual seller because the exchange. So when I'm buying something, I'm buying it from the exchange. I don't know who's on the other side of the exchange or who's behind the exchange. हाँ जी, कोई doubt यहाँ तक forward or future? Any questions in this one? Hello. Yes, what? Sir, what is the purpose of OTC? So OTC is much. So there are two platforms. So the purpose for exchange and the OTC is same. The purpose is to provide a platform where the marketplace can enter into these agreements. Now, those people who wants to have the customized negotiation. So, for example, when I deal in the OTC, I can do customization as per my preference. But in an exchange, that customization is not possible because I have to enter into standardized contract. So that is the purpose. So in OTC, it's a customized contract. Customized means you can give your requirements and उसके हिसाब से agreement बनता है. But whereas in exchange traded contracts, it's a standard agreements. आप change नहीं करा सकते. So those people who wants to enter into customized agreement will go to OTC, and that's where the purpose of the OTC is. Any other question? सर, ये जैसे आपने एग्जांपल दिया आगे कि अगर प्राइस ऑफ द राइस अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो एक तरीके से लॉस भी तो हो सकता है कस्टमर को. So depend करता है आप किस तरीके से देखते हो. So let's assume आपने एक इंश्योरेंस. So let's go back to this example. This example of buying a new car. ठीक है, आपने नई कार परचेज किया, आप उसका प्रीमियम पे करते हो फॉर द ईयर. लेट्स में आपने 5,000 का प्रीमियम पे किया फॉर द इंटायर ईयर, and there is no damage on the car or no theft in the car for the entire year. So at the end of the year तक आपने कोई क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी से. मनमीत, you take that 5,000 as loss? लॉस नहीं कह सकते सर, वो तो अपनी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं. यहाँ पे भी तो वही चीज है ना. आप वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया है. अब वो नीचे जाए ऊपर जाए, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. इफ यू से यार आई एम सेटिस्फाइड, 100 रुपीज ब्लॉक हो गया, 100 रुपीज मुझे पहले से पता था एंड आई हैव प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली. If you believe in that way, that is what hedging means. Then you're not worried about 80 or 110 because you manage everything according to the pricing of the 100. But if after entering into contract we're still worried about 80 हो जाएगा तो profit होगा, loss होगा, then it is not hedging, then you are entering into a speculation. ओके. तो yes, loss हो सकता है, but उस loss को आप
इम्पोर्टेंस देते हो या नहीं देते हो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट comes from your perspective. How, what's your perspective of looking at these contracts? मतलब डिपेंड सिचुएशन के ऊपर करता है, कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन के ऊपर नहीं करता है, डिपेंड करता है आपका इंटेंट क्या है एग्रीमेंट एंटर करने के। सो आई गिव यू सेम एग्जांपल, करेक्ट? आपने इंश्योरेंस लिया, you've not there is no accident in that year, there's no damage, so there might be two people, correct? One at the end of the year might say, okay, thank God I didn't have anything or any event of such scenario, and hence I'm thankful. So for that person, the 5,000 rupees is not an issue because he's happy that nothing happened to his or her car. Case two, there's another person who's crying, अरे यार मैंने 5,000 का इंश्योरेंस क्यों लिया, बिकॉज कुछ तो हुआ ही नहीं, तो 5,000 रुपीज का मुझे फालतू में लॉस हो गया. If you're looking at, if your intent and the mindset is the second, then you're speculation. If your intent and mindset is the first person, then it is hedge. ओके सर, अंडरस्टूड। हेलो। हेलो। मतलब रिपीट करोगे एक बार, क्या पूछ रहे थे? आई थिंक आई कुडंट हियर यू वेरी क्लियर. सब मुझे भी आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं पूछा। मैं ये कह रहा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है कमोडिटी मार्केट में ही यूज किया जाएगा या फिर शेयर मार्केट में भी? कहीं भी यूज कर सकते हैं. सो कैन बी यूज इन कमोडिटीज, कैन बी यूज इन करेंसी आल्सो, शेयर मार्केट आल्सो. सो इट कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ मार्केट. बट यहाँ पर लिखा हुआ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन एनसी नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज रेट। तो जो कमोडिटी है वो एनसीडीएक्स पे होंगे या एमसीएक्स पे होंगे, बट जो बाकी हैं, जैसे इक्विटी के होंगे तो वो तो इक्विटी मार्केट में ट्रेड होंगे, जो करेंसी के हैं वो करेंसी मार्केट में ट्रेड होंगे, कमोडिटी के कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होंगे. तो क्लियर सर। एनीथिंग एल्स इन फॉरवर्ड इन फ्यूचर? Just see this slide and let me know. So, have you understood this? Otherwise, I explain this slide. Just take a minute and try and go through this slide.
So ये जो example है, this is on the currency side. So let me continue with this rice only, वो better रहेगा आप लोग के लिए. So इसी example हमने किया. So suppose I have a restaurant, and it's a biryani restaurant. Let's take that. Okay, I have a restaurant and it aggressively sells biryani, and of course one of the input for the biryani is rice, correct? So let's assume my pricing for this product, which is biryani in this case. Now I can't change my price in the menu, correct? Every day or every month or every week, depending on the change in the price of the rice. So it's a fixed price at least for some duration. So let's assume अगर मुझे price of biryani fix करना है, so I'm concerned कि अगर मैंने price of biryani fix कर दिया and rice का price ऊपर चला गया, so I will have a lot of problem in this. So that's where the concern comes in. And so suppose मुझे वो price of biryani, so I'm concerned about the input, which is rice, if price goes up. Correct? Any doubt till this point? Okay. So now so we are on 2nd Feb. Okay. Now if I enter into this contract, जो हमने यहाँ पे लिखा, if I enter into this contract on 2nd Feb, so what it does, in this case, I'm A. It means A is the one who owns the restaurant. Okay, so what it does, this contract freezes the price of rice for A for month of Feb. Sorry, आज Feb नहीं है ना, so this is the 2nd Jan. So which means for a 1 month, which is from 2nd Jan to 2nd Feb, this restaurant owner will not be worried about this fluctuation of the price, because he or she knows that for the Feb, this input price will be at 100 rupees per kg. And then accordingly, the restaurant owner can set the biryani price. So let's assume he sets the price for the biryani, let's assume 200 rupees kg. Now, what it does,
if I am a restaurant owner, for me, my input price is freezed and my output price is freezed. That's where it gives me security and gives me a hedge. हाँ जी, कुछ पूछना है तो बताइए. देख लीजिए एग्जाम्पल. दिस इज इम्पोर्टेंट एंड लेट मी नो कोई डाउट है तो. Right, last time, any questions out in this? If we want to settle it on 30th of January, then So it depends. So if you have those clauses available in an agreement that you can do an early termination or a rollover, if those clauses are available in the agreement, of course, then you can do it. Of course, you have to pay a price for it. But if that clause doesn't exist, then of course you can't do it. So it's based on the terms and conditions of the contract that you're entering at the beginning of the month, or so suppose in this example you're entering on the 2nd Jan. So if A and B have factored that in an agreement, then of course then you can do that. Anything else in this? okay. If on both on second he doesn't realizes it, he wants it in 10th of February, then what will happen to it will terminate, and the payoff will happen to either the party. He will not terminate. So he will unwind basically. So there will be two market actions. One would be the so technically he will do a rollover. So rollover means आप whatever is your existing maturity or your existing settlement date, you're extending that settlement date, you're postponing that settlement date. That's called as a roll over the contract. So Yes. in this example, if when I enter into contract on 2nd Jan, my expiry date is 2nd Feb, and the scenario that you are adding to this is, so rather than settling on the 2nd Feb, I want to settle on the 28th of Feb. So which means I want to shift or postpone my settlement date or my expiry date from 2nd Feb to 28th Feb. So I will do a rollover. So rollover is, of course, you will wind up the previous contract and enter into a new contract. And these two actions put together, which means the winding up of the previous contract and ending a new contract, both these two actions put together is called as rollover, which in turn will give you an effect of extending the expiry to 28th Feb or whatever date that you want to get it. That's the only thing. Nothing will happen to the payoff. Sorry? Nothing will happen in terms of payoff. No, it will impact.
it will impact payoff, but the impact on the payoff will be basis the market price at that date where you're coming in and doing the rollover. So let me take an example. अगर आपको payoff में interest है तो give me a second. Give me a second. Okay. Yeah. So suppose on 15th Feb, sorry, not 15th, 15th Jan. Suppose A comes and request to change the expiry date to 28th Feb. This is what you want, Deepak, correct? Either we can on 2nd of Fab we can take the example instead of taking this. Either case, it's okay. 2nd Feb ले लेते. So A comes and requests to change the expiry to 28th Feb, and he comes on 2nd Feb. Now, on 2nd Feb, जो market price है और rice, any specific number that you want to take, Deepak, or should I take anything? Yeah, take anything, the lower side or higher side, whatever it is. Okay. So let's assume if the rice ka prices are suppose so let's take 85 rupees per kg. Now, ideally, what was required? So what, as per original contract, A was required to buy 1 kg at the price of okay, so this is what the original contract, the obligation as per the original contract. Okay. And on 2nd Feb, because of the market price is 85, A profit में है कि loss में? So A is under obligation to buy something at 100 rupees, which is available in the market at 85 rupees. So A is in profit or loss? Loss. Yeah. So A will tell B to unwind this contract. So B will say, okay, if you do not want to buy this contract, if you do not want to buy the rice, you pay me the difference. So A will pay 15 rupees to B, and then this contract
will get cancelled. So ये तो हो गया unbind, first part. Now A will request B to enter in contract जिसकी हमें कितनी चाहिए थी 28 से. And let's assume the new price is, let's assume क्योंकि market has gone down, so new price is, let's assume 95 rupees पे आ गया. ये new contract हो गया. ये दोनों put together is called as rollover. So this is what, or this is how one can extend the maturity if that is required. Deepak, quit out इसमें. No. Anybody else any doubt on this? Any questions last time? Okay. So the between forward and futures, so suppose now 100 kg, sorry, 1 kg or something like 100 kg. So suppose if you need 100 kg, so you can enter into this contract. Okay, we buy 100 kg at the price of 100 rupees per kg. But let's assume you want to get into these odd numbers of 99 kg, 98 kg, 92 kg because that's what you need. You don't want to buy more than what you need. Then when you need these customized type of requirement, that's where you enter into forward. But if you're comfortable with the standard agreement, so let me take this example. So if I want to buy a shirt for myself, I have two options. If I need shirt for myself, I have two options. I can go to a tailor and give him or her uh, the cloth and then basis my customization specific requirement in terms of size, in terms of style, I can ask the tailor to stitch a shirt, customized shirt for myself. So that's kind of an OTC contract. Okay, but let's assume you go to a mall and you buy a ready-made shirt of a particular brand, then you don't have too much of customization options available. Correct? What is available, you have to pick and choose. Maximum what they are sizes medium, small, large, something like this, and you can select any of these basis your size and specifications, or there are different styles and colors you can pick and choose. But let's assume if you select medium blue shirt for yourself, then that's it. You can't ask for much customization on that. Let's assume that shop doesn't give you customizations once you buy that shirt, because some of these brands allow you to do certain customization. Well, let's assume that's not possible. So that becomes an exchange traded kind of an example. so this is what forwards and futures is all about in terms of hedging. Any questions before I close this? So forward and futures can be termed as tools for hedging? Yes, so derivatives is the tools for hedging, and forward and futures is one of the examples of those derivatives. That's the way you need to understand. So yes, forwards and futures is one of the tools of hedging. Okay. Anything else in forwards and futures?
Let's see this example as well, जो आपके slides में है. A company has invoiced goods worth ₹1,000 to customers. Current exchange rate है $70, $70 INR, which is $1 is equivalent to 70 INR, and company would expect to receive 70,000. Yes, first पैरा में कोई doubt? मैंने कुछ goods sell करे हैं. So let's say I've sold goods to Parul, and I am expecting that Parul will give me, not expecting, the agreement is that Parul, which is seller, sorry, Parul is the buyer, I am the seller, that the seller, which is Parul in this example, will pay me $1,000 at the end of the month or whatever is the date, and current exchange rate is $1.70. Hence, for this $1,000 converted at $1.70, I'm expecting 70,000 rupees. Any doubt on the first para? Okay. So this company enters into forward contract to sell dollars at 70. Now, what does this mean? So because I will receive $1,000 from Parul and I'm an Indian company, this $1,000 is of no use to me because my expenses are in INR. So I need to convert these dollars into INR, correct? So for that, I have to sell dollars. And that's why I went into contract to sell dollars at 70. Is this part clear? Okay. So now, if on the expiry, on the maturity, if the exchange rate, actual exchange rate in the market goes to 70, remains at 70, then there's no problem because then you will receive 70,000. You're expecting to receive 70,000, you will receive 70,000, and hence there is no issue on this. But let's take 75 example. If in the market exchange rate goes to 75, okay, so tab bhi, because you have entered into an obligation, you will receive 70,000 INR, not 75,000 INR. So ये 5,000 जो है ये आपको notional loss हो जाएगा. And why I'm saying this notional loss? Because as I said, if you're looking from a hedging perspective, this 5,000 loss or profit is what you should not worried about. Similarly, if this goes to 65,000, you will still receive 70,000. So it's a plus 5,000 notional profit for you. So is this 75,000 and 65,000 example clear? Any questions in this? If you are settling this on the agreed date, then it is a notional loss. And if you are rolling over, then it will be an actual loss. अगर आप सेटल भी कर रहे हो तो भी एक्चुअली ये एक्चुअल लॉस है,
And that's where the intent comes in. How do you look at these payments? So, for example, अगर मैं जिस दिन सेटल कर रहा हूँ उस दिन 75,000 रुपीज है और मैं नेट सेटल करता हूँ, तो मुझे 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे बैंक को, या इन दिस एग्जांपल अगर मैंने बी के समय एंटर किया, दीपक, मैं सेटलिंग में भी मैं 5,000 रुपीज पे करूंगा यहाँ पे. That's not an act. That will be an actual loss. That will not be a notional loss. हाँ, तो विद योर स्कूल ऑफ थॉट आपने बोला कि अगर सेटल करोगे तो नोशनल लॉस होगा, रोल ओवर करोगे तो एक्चुअल लॉस होगा. दैट्स व्हाट यू सेड, करेक्ट? Yes, yes. बट जो मैं अब सिनेरियो आपको दे रहा हूँ उसमें तो मैंने रोल ओवर नहीं किया, सेटल किया, तब भी मुझे लॉस ही हो जाएगा. सो इट इज नॉट अ नोशनल लॉस. Means that is an accounting loss. Means you are not giving anything out of that. यू आर गिविंग ना 5,000 रुपीज आप पे कर रहे हो ना. अगर मैं 20 जो भी इसकी मेच्योरिटी, लेट्स से 28 फेब इज अ मेच्योरिटी एंड 28 फेब को अगर 75 रुपीज हो जाता है ओपन मार्केट में एंड आई डू अ नेट सेटल विद द बैंक एंड आई हैव टू पे 5,000 रुपीज टू द बैंक. नहीं? Okay. Then what is the case of why we have hedged? अगर हमको उस सेटलमेंट डेट पे अगर मैं रोल ओवर नहीं कर रहा हूँ उस पे भी अगर मेरे को 5,000 पे करना पड़ेगा. Because the reason why you were hedged because you wanted to stay at 70,000 rupees. I'm least bothered about what is the spot rate going on, the current prevailing rate in which the settlement has happened. The same logic should apply up rollover में ना. So I'm okay. देखो, there's a difference. There are different school of thoughts. What I'm telling you that if you follow a one school of thought, then the same school of thought should be applied both on the settlement and the rollover. That's fine. And that's why you have three categories of the one is speculation, one is hedging, and third is the arbitrage. And these are the three different school of thought. आप किस तरीके से play करते हो market में. So, but if you are saying कि मेरे को एक स्कूल ऑफ थॉट से जाना है तो दोनों स्ट्रैटेजीज में या दोनों एक्शंस में एक ही स्कूल ऑफ थॉट लगेगा. अगर आप कहते हो मैं इसको लॉसेस पर्सपेक्टिव से नहीं देखो, एंड आई एम नॉट लुकिंग इट फ्रॉम एन accounting perspective, I'm looking more from economic perspective. How does it impact to the business from economic perspective? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अगर 5,000 पे करे तो मेरे नोशनल लॉस नहीं है बट मेरे लिए एक्चुअल लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, देन दोनों ही केस में मुझे सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा. इफ आई एम लुकिंग एट दिस वे कि यार इससे मुझे प्रोटेक्शन हो गया, तो मेरे लिए लॉस नहीं है, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम पेइंग एज अ कॉस्ट to protect myself, then this is not treated as loss and this is treated as an expense. The term notional loss. Correct. So what is that? जैसे यहाँ पे मेरे को $1,000 मिलने हैं, ठीक है, पारुल से यहाँ पे. ठीक है, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 75 चल रहा है, बट मेरा जो फॉरवर्ड का रेट है वो 70 है. नाउ बिकॉज आई एम एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मुझे कितना पैसा हाथ में आएगा? 70,000 rupees. If I would have not entered into this contract, then I would have got 75,000 rupees. Are you with me until this point? That's okay. That's why we have hedged to reduce that fluctuation risk. No, so that's where the intent comes in, the mindset comes in, and school of thought comes in. So this is one school of thought of the corporates who says, यार ये तुमने 5,000 मेरे डुबा दिए.
वो ट्रेडर को ये बोलते हैं तूने 5,000 रुपए कम करवा दी मार्केट में. So that person will record this as a loss. Record in the sense from economic perspective. So that trader will be penalized and say, okay, you've not done something good for the organization because you have technically incurred a loss. क्योंकि हमारे को इस $1,000 के 75,000 रुपीज मिलते, तुमने ऐसी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से हमारे को सिर्फ $1,000 के सिर्फ 70,000 रुपए मिले, 70,000 रुपीज मिले. The other school of thought is they will not look at this 75,000 rupees. They will say, okay, हमें 70,000 मिलने हैं, 70,000 मिल गए, खत्म काम. Now, which school of thought you want to play is the call that you need to take as an organization. If you're going on this is not hedging, this is speculation. If you're going on the hedging side, then you need to be on this school of thought. This is what I'm trying to explain. तो दोनों सही है, ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत है, सही है. It's how do you see your business and how do you want to drive the business is what the different school of thought. No, I'm not saying that. I'm saying that on that day, Abhi, you are not able to get that money of $1,000. What will happen? किस दिन? Whatever date you have mentioned as a forward contract, $1,000 you supposed to get and you have not got that, and you have already entered in the. I mean, mutually agreed वो रोल ओवर आगे चला गया है. हाँ ठीक है, फिर क्या होगा फिर? तो आगे चला गया तो भी मुझे बैंक को आपको पे करना पड़ेगा. बैंक को आपको पे करना पड़ेगा. अगर मैं रोल ओवर कर रहा हूँ तो 2,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकती है ना. व्हाटएवर, सो 5,000 ले लो. सो 5,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. दोनों सिनेरियो पॉसिबल है ना. तो अगर मैं प्रॉफिट को भी कंसिडर नहीं करूंगा, एंड बिकॉज आई विल टेल माई सेल्फ कि मैं अगेन अकाउंटिंग साइड से नहीं सिखा रहा हूँ दीपक. यहाँ पे अकाउंटिंग साइड में ये आप पे कर रहे हो तो आप उसको माइनस दिखाओ. मैं आपको इकोनॉमिक साइड बता रहा हूँ. अगर मैं फर्स्ट अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे जाएंगे बिकॉज दोनों थॉट्स अलग हैं. अकाउंटिंग साइड सीखना तो इसमें तो कोई फिर लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कॉम्प्लिकेटेड पीस. अकाउंटिंग साइड तो सिंपल सी है. अगर आप पे कर रहे हैं तो उसको लॉस ट्रीट कर रहा है, खत्म, बस. ठीक है. पेइंग एंड इट इज रिकॉर्डिंग एज लॉस. ओके, अकाउंटिंग साइड आप मार्क टू मार्केट देखोगे और व्हाटएवर लॉस गेन यू विल अकाउंट फॉर दैट. नहीं. ओनली इफ एमटीएम इज नेगेटिव देन यू अकाउंट. अगर एमटीएम इज पॉजिटिव यू डू नॉट अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आपने मैच्योर्ड हो गया, यू गॉट द $1,000 एंड मार्क टू मार्केट वाज पॉजिटिव, then you will not account from accounting perspective. I will not record that as a profit अगर मेरा वो पॉजिटिव एमटीएम है. अगर मुझे वो रिसीव हो जाता है पैसा तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट. ओके, वो डिफरेंस है ना. एमटीएम पॉजिटिव और रिसीव प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस है. एमटीएम अगर नेगेटिव है तो रिकॉर्ड करूंगा. अगर एमटीएम पॉजिटिव है तो इग्नोर करूंगा. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सेटल होने के बाद भी वी विल इग्नोर दैट. अगर सेटल हो जाएगा तो पॉजिटिव एमटीएम नहीं रहेगा ना, वो या तो रिसीव होगा या पे होगा ना. ठीक है. तो इस वाली एमटीएम वाली कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी मूव कर जाएगा. एमटीएम तभी तक रहेगा जब तक वो सेटल नहीं होगा. Okay. From economic perspective, I know that. From economic point of view, I'm clear. And the rest of the people, if I have any question. Anybody else any other question in this? Yeah, I got little confused. If
Like there is no rollover, nothing, and then ये आपको on नहीं the करने पड़ेगा, maturity ये date. छोड़ दो। ये जो मैंने लिखा ये वाला इज द पीस जो आपको जरूरत नहीं है एज ए फाइनेंशियल और मॉडलिंग एनालिस्ट, बट फिर भी रखते हैं स्क्रीन पे, अगर डाउट है तो पूछ लो। Okay. बोलिए। तो बस the doubt was कि if the due was 70,000 and the market price on the maturity date नहीं, is ड्यू 75. 70,000, नो, ड्यू 70,000 is a wrong statement. The amount that is due is $1,000, not 70,000, because in this example you have promised to pay me $1,000. You have not promised to pay me 70,000. That is my lookout कि वो $1,000 में कितना आयना लेके आ पाता हूँ। आपका क्यों हमने फिक्स ऑब्लिगेशन, करा है ना 70 and as per the contract. हाँ वो तो मैंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज किया है। सो यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, एक मैं विच इज सेलर और एक आप जो बायर। Between Parul and Nishant, what is the obligation? So obligation of Nishant is Nishant will give you this product and Parul will give me $1,000. That's where the agreement of the contract between Parul and Nishant export and import goes off. यहाँ तक आप क्लियर हो? Okay, yes. देन अब वो मुझे $1,000 आपने दे दिया, अब मैं $1,000 लेके किसी और के पास जाऊंगा, लेट्स अज्यूम आई गो टू दीपक एंड से ये $1,000 के लिए मेरे साथ एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट आप कर लो। तो ये तीन पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, मतलब रियल वर्ल्ड में तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है इसमें। Okay, मतलब for the currency conversion you have not gone to exchange rate, you have gone to someone and entered into the forward contract. या व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, तो करेंसी कन्वर्जन होता है जिसने एक्चुअली आपके प्रोडक्ट खरीदे हैं, जो एक्चुअल बायर होता है उससे करेंसी कन्वर्जन नहीं करते। करेंसी कन्वर्जन के लिए आप किसी को थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है, विच इन इंडिया इट विल बी बैंक बिकॉज ऑफ करेंसी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम फैमा पर्सपेक्टिव। इंडिया में आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। Okay. ओके तो उस दिन पे मैच्योरिटी पे जैसे ये आपका कन्वर्जन हो गया, बट अगर मार्केट प्राइस अप डाउन हो रहा है और जो हमारा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो वी विल रिकॉर्ड दैट, द कंपनी विल रिकॉर्ड दैट और नॉट? अकाउंटिंग साइड की इकोनॉमिक साइड, कौन सी साइड समझना चाह रहे हो आप? अगर अकाउंटिंग साइड आप समझना चाह रहे हो साइड से क्या सेंस, मतलब क्या मीनिंग है? ये क्लियर हो गया आपको अकाउंटिंग साइड बिफोर आई गो टू इकोनॉमिक साइड, मतलब ये क्लियर है? ये अकाउंटिंग साइड में अकाउंटिंग यही है ना कि अगर लॉसेस हैं देन इट विल अकाउंट। मतलब है कि अकाउंटिंग साइड का मतलब है कि जो अकाउंटिंग बुक्स है उसमें कैसे एंट्री होगी, वो ये मतलब। हाँ, तो इसमें ये मतलब है कि अगर लॉसेस है वी विल अकाउंट और अगर प्रॉफिट है देन विल नॉट। करेक्ट, ओके, करेक्ट। अब इकोनॉमिक साइड देख लेते हैं। इकोनॉमिक साइड में अगर मैं the way a hedger will look and probably will perceive this is कि मैंने एक एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे 70,000 मिलने वाले हैं। अब मुझे 70,000 मिल गए, आई एम सेटिस्फाइड। रियल मार्केट में वो 70,000 उसकी वैल्यू 75 हो गई है, 65 हो गया, आई विल नॉट बी वरीड अबाउट दैट। Parul, let's assume today you buy a property. आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और आपने सोचा यार ये 6 महीने में 1.5 CR की हो जाएगी और मैं बेच दूंगी, ये आपका प्लान है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 6 मंथ्स में वो 1.5 की हो गई और आपने बेच दी, ठीक है। और लेट्स अज्यूम आपको 10 डेज के बाद पता लगता है कि एक मार्केट में आपके पास एक सेलर आता है, एक बायर आता है, बोलता है मैं इस प्रॉपर्टी को 1.55 की खरीदने के लिए रेडी था। अब आपको कह रहे यार मुझे 5 लाख का लॉस हो गया, यार मुझे लॉस हो गया। अगर आप ऐसे बोलोगे देन you are not looking this from a hedging perspective. But let's say if the person says to himself, यार मेरा टारगेट 1 करोड़ का खरीद के 1.5 पे बेचने का था, and I did that and I earned what I expected with 50 lakhs. I'm satisfied. I'm not worried about 5 lakh का जो ये notional loss कह सकते हो वो हुआ। So that's what I'm telling you, this is a mindset game, that how do you perceive these agreements. If you're a first person जो 5 लाख रुपए अरे यार उसको गया, उसको लेके स्ट्रेस में आएगा या उसको लेके कंसर्न होगा और विल रिएक्ट नेगेटिवली,
then you are not hedging, then you are speculating. समझ आया? समझ आ गया, बट नॉर्मल कोर्स में जैसे नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनीज, उनका माइंडसेट हो सकता है, बट नॉर्मल कोर्स में भी द पीपल टेंड टू मतलब क्या बोलते हैं, कंपेयर द मार्केट प्राइस एज पर द हेज्ड प्राइस. So depend करता है. So yes, there are companies who do that. There are companies of the management who believes no, what we've done is right, and then we're not worried about what's going in the market. Both ways है. दोनों school of thought है. कुछ गलत सही नहीं है. It's how do you want to run your business? क्योंकि दोनों की strategies अलग होती है, दोनों की जो जिस तरीके से प्लानिंग होती है वो अलग होती है, and stuff like this. ठीक है. Anybody else any other doubt in this forward? Sir, one question I have. हाँ जी, बोलिए. सर जैसे इसमें आपने बताया कि जो हम लोग फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करेंगे वो बैंक के साथ में करेंगे, बट अगर इस एग्जांपल में जैसे वो डिफाइन ना होता कि हम लोग @70 के हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे ऑन ड्यू डेट, तो अगर हमने फॉरवर्ड या फ्यूचर बैंक के साथ में किया होता कि हम लोग इतने में कर देंगे, बट एट द टाइम ऑफ द पेमेंट अगर मतलब हमने बैंक के साथ में 70 में किया हुआ है @70, बट एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑन ड्यू डेट वो 75 चला जाता है, तो हमें तो @75 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, तो बैंक हमें 5000 जो एक्स्ट्रा है वो पे करेगा. तो आप क्या कर रहे हो? आप रोल ओवर कर रहे हो कि सेटल कर रहे हो? मतलब आप उसी दिन जो आपकी डेट है उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर रहे हो कि आप एक्सटेंड कर रहे हो? उसी दिन सर, उसी दिन सेटल कर रहे हैं. हाँ, तो बैंक आपको कुछ 5000 प्लस और माइनस नहीं देगा. सो आपको आप बैंक को $1000 दे दोगे और बैंक आपको बदले में 70,000 INR दे देगा. खत्म. चाहे मार्केट में 65 चल रहा हो, चाहे मार्केट में 75 चल रहा हो, वो बैंक आपसे उसके बारे में बात नहीं करेगा. नहीं, मैं सर ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर एग्जाम्पल में डिफाइंड ना होता है @70, बट अगर जो सेलर है वो ये ऐसा कहता है नहीं कि जो होगा. रेट हम ऐसा नहीं होगा. वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा में नहीं डिफाइंड होता. होगा. हाँ, आप तभी तो इस कॉन्ट्रैक्ट ओके. में, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं 70 का रेट ही हटा दूं और बोलूं कि उस वक्त जो रेट होगा वो देख लेंगे, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है सर. कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस यही है ना कि आपको आज, विच इज टुडे 2nd Jan, you know that on 2nd Feb what price you will get. And you are between 2nd Jan and 2nd Feb, you're not worried where the market will go. And you can focus on your business rather than worrying about the market. आपका एक रेस्टोरेंट ओके सर. बिजनेस है, लेट्स से आपने एंटर नहीं किया होता, अब आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है. अब रेस्टोरेंट बिजनेस एक छोटा एग्जांपल है, इसलिए आपको लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें. ठीक है. थिंक ऑफ एन ऑयल कंपनी व्हिच नीड्स क्रूड ऑयल. लेट्स से आप कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, ठीक है, इट्स अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. आपको बहुत ज्यादा मंथली क्रूड ऑयल चाहिए होता है, और क्रूड ऑयल का थोड़ा सा प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है, आप पूरा बिजनेस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस इम्पैक्ट हो जाता है. सो फॉर यू, the freezing the price of the oil in advance is important piece, correct? यस सर. तो अगर मैं उस एग्रीमेंट से प्राइस फ्रीज को हटा दूंगा तो फिर आपके लिए बचा कैसे एग्रीमेंट? मतलब वही ये प्राइस पहले से डिफाइंड होगा हमारे पास. समझ में आ गया सर. ठीक है. हाँ जी. Anything else in this forward and future? Guys, last time, any questions in this?
Okay. Now, the other type of products which is available is called as options. Now, मैंने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड वो फ्यूचर में क्या होता है. दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, जो ऑरेंज में हाईलाइट किया मैंने, ये ध्यान से देख लीजिए. फॉरवर्ड फ्यूचर में दोनों, विच इज बायर एंड सेलर, दोनों का ऑब्लिगेशन होता है फिक्स. ठीक है. बट ऑप्शन में क्या होता है, बायर हैज राइट but not obligation, and seller has obligation. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए. ठीक है. So let's take this example and continue for options, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. तो same example में let's assume A buys option for let's assume $1,000 at the rate of 70, and expiry is let's assume on 28th Feb. So on 28th Feb, तीन सिनेरियो ले लेते हैं. The market can go to 65, can go to 70, and can go 75. So market can move down, remain same, and move up. These three combinations, these are three only combinations which are possible. Now, if the exchange rate in the market is $1.65, look at from A's perspective. A के पास $1,000 है, उसको the A wants to convert dollars into INR. ठीक है. अब A के पास दो choices है. One, A can use this contract. He can use this option contract. अगर A उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यूज करेगा तो उसको $1 के अगेंस्ट 70 रुपीज मिलेंगे. And if A does not use this contract and go in the market and sell dollar, तो उसको $1 के अगेंस्ट 65 रुपीज मिलेंगे. ये बात सबको समझ आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? Hence, A will use option contract and वो $1,000 into 70 पे कन्वर्ट करेगा. चलिए फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार.
सो ए के पास दो चॉइसेस हैं. वन, मार्केट में जाएगा तो 65 पे मिलेगा, मार्केट में नहीं जाएगा और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज करेगा तो 70 पे मिलेगा. तो अगर आपको डॉलर सेल करना, यू ऑलवेज वांट टू सेल एट हायर प्राइस ना, सो यू यूज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, हेंस you will convert your $1,000 at 70 rupees. Amit, you clear है? Yes sir, yes sir. So अगर 75 जाता है, so let's look at 75. So if it goes to 75, again I have two choices. I means A has two choices. Choice one, A uses the option contract. If A uses option contract, then A will be able to sell dollar at 70 rupees, per dollar at 70 rupees. But if A does not use the option contract and goes in the market, then A will be able to sell $1 at 75 rupees. Any doubt at this point? Okay. So then what does it mean? That A will not use option contract and hence वो market में convert कराएगा, which will be at rate of 1000 into 75. Is this part clear to everyone? Any questions? ठीक है. अगर 70 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, because both the choices will give you $1,000 into 70, so it doesn't make too much difference if it remains 70. Okay, so when you use your option contract, it is called as exercising of an option contract, and we do not use it called as a non-exercise. एक्सरसाइज मतलब आप अपने राइट को यूज कर रहे हैं. ऑप्शन में डिस्कस किया ना, राइट होता है. So this is what the option is. Any questions out to this point? सर अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा 75 पर भी, तो फिर उसका प्रीमियम तो जाएगा ही, जो प्रीमियम पहले ही अपना दे रखा है. मैंने प्रीमियम का कभी कोई बात ही नहीं किया था फिर, सो थोड़ी ये बाद में बात करेंगे, पर ठीक है, अगर आप लोग को कोई पुरानी स्टाइल ही समझना है. सो ए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एक कॉस्ट पे करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. सो ए पेज कॉस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. सो लेट्स assume ए ने प्रीमियम पे किया 2 रुपीज. सो चाहे 65 जाए, चाहे 70 जाए, चाहे 75 जाए, ये प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा उसको. सो ये फजल जो आप बोल रहे हो, अगर 75 है, उसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं किया, तो जो उसने प्रीमियम पे कर दिया वो गया, तो वो उसका एक्सपेंस है.
तो ऑप्शंस क्लॉज, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये फिक्स्ड क्लॉज होता होगा ना? यस, सो यही डिफरेंस है ऑप्शन और फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में आपको एंटर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है, बट ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और रीजन क्या है? क्योंकि फॉरवर्ड में आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलता, बट ऑप्शन में बायर को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कि तुम्हारी मर्जी हो तो आ जाना, नहीं मर्जी हो तो मत आना। उस एक्स्ट्रा एडवांटेज की आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। अदरवाइज अगर कॉस्ट नहीं पे करोगे तो हर कोई ऑप्शन में एंटर कर जाएगा ना, फॉरवर्ड कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड तो डिसएडवांटेज पे होता है। यस। तो इस एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। और वो प्राइस आपको वापस नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी सिनेरियो हो जाए। वंस यू हैव पेड, इट विल नॉट कम बैक टू यू। हाँ जी, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन, डाउट? Such things you can do in forwards also. सच थिंग मतलब ये जो One प्रीमियम minute, वाला $1,000 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हूं मैं, मैच्योरिटी डेट आ गई, I want to sell it in the market, and whatever be the plus and minus in the forward contract when it will be expired, I'll take that hit. हाँ, वो तो हमने डिस्कस किया ना। The option is also there in not option, you have the कि आप फॉरवर्ड को यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब उसके लिए आपको वो लॉस बियर करना पड़ता है ना। यहाँ पे इस ऑप्शन में मैं वो लॉस बियर नहीं करता, आई लेट दैट लॉस टू गो टू समबडी एल्स। जैसे यहाँ पे 75 है, ऑप्शन प्रीमियम का लॉस तो चला ही गया आपका, which is, हाँ, तो अगर ऑप्शन प्रीमियम का लॉस इज लेस देन द लॉस दैट विल दिस कॉन्ट्रैक्ट विल डू। जैसे यहाँ पे 75 का एग्जांपल ले लेते हैं ना, 75 का एग्जांपल है, यहाँ पे ₹5 का लॉस है पर डॉलर, प्रीमियम मैंने पे किया ₹2, आई एम स्टिल इनटू द एडवांटेज सिचुएशन ऑफ प्लस ₹3 ना। अब ये अगर फॉरवर्ड होता है तो आई प्रोबब्ली वुड हैव इंकर्ड लॉस ऑफ ₹5। ऑप्शन है तो मैंने सिर्फ ₹2 का लॉस इंकर किया। तो दैट इज द डिफरेंस एडवांटेज बिटवीन ऑप्शन एंड फॉरवर्ड। दूसरा, ऑप्शन में जो आपका लॉस है वो कभी भी प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता। जितना प्रीमियम है सिर्फ वही मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है। फॉरवर्ड में आपका लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी लॉस हो सकता है। कैसे अनलिमिटेड है? ये जो एग्जांपल हमने ये जो एग्जांपल यहाँ पे हमने किया, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया 70,000। अगर एक्सचेंज रेट 1 USD इक्वल टू 100 INR हो जाता है, अब 30,000 का लॉस हो गया आपको। जो आप 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते थे वो आपको बियर करने पड़ेंगे। ऑप्शन में आप इसको प्रॉफिट कर सकते हो। ऑप्शन में when market moves in your favor,
आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। फॉरवर्ड में वेदर मार्केट मूव्स इन योर फेवर आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से लॉस अनलिमिटेड। अभी जितना ऊपर जाता जाएगा आपको उतना हिट लगता जाएगा। Why we are buying options? Sorry? Why we are buying options? We're buying option because we want the choice to come to me. कि मेरे पास choice है, मैं क्या करना चाहता हूँ। I don't want to get into an obligation. Choice is But always better than obligation. but if you have this, you are saying that if it is in bullish, तो हमको फेवर में रहेगा ऑप्शन rather than forward. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका रिस्क एपेटाइट आपको डिसाइड करना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है कि बस मुझे कॉस्ट पेयर नहीं करनी है, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना दीपक, लेट्स अज्यूम आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी में आप प्रीमियम पे करते हो। लेट्स अज्यूम कि आपकी गाड़ी पे कोई डैमेज हो जाता है, कुछ स्क्रैच लग गया या कुछ डैमेज हो गया। आपके पास चॉइस है ना कि आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम लेना है, या कि आपको कहे या छोड़ो इंश्योरेंस कंपनी को जाऊंगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खराब होगा, यू गो टू योर मैकेनिक गैराज एंड से कि रिपेयर कर दे, आई एम ओके विद इट। It's a choice or an obligation once you take the insurance policy. क्या obligation होता है? Now give the same, if you have the same example for forward in the नहीं, car पहले insurance. इसको क्लोज करते हैं, नहीं, फिर that's okay. That's इंश्योरेंस I've already. एग्जांपल है, उसमें आपके पास चॉइस होगा कि ऑब्लिगेशन हो। That's okay. There's a choice. हाँ, Now अब वो जो you चॉइस, should give us रुक जा आ रहा हूँ। वो जो चॉइस है, उस चॉइस फ्री में नहीं मिली आपको। उस चॉइस के लिए आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यू हैव पेड सम प्रीमियम। So this is what happens. Now let's take to the forward. Sorry, let's bring to this currency side. अब अगर मेरे पास डॉलर्स हैं, मैंने आपके साथ एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया 70 रुपए पे, तो मेरे पास चॉइस है मैं आपके पास आऊं कि मार्केट में जाऊं, और वो मैं डिसाइड करूंगा कि कब मेरे को आपके पास आना है और कब मुझे मार्केट में जाना है। अब पूछो क्या पूछ रहे हो? ऑप्शंस हम आप मार्केट में जा रहे हो ऑप्शंस के लिए, per dollar you are giving some premium for this. If it goes to my favor, I'll exercise that option. If it is not going in, I'll not do that. I will go into the spot market or जो prevailing rate है. This is what you want to. Why we are taking this option? करेक्ट। और ये जो मुझे एडवांटेज है, ये मुझे फॉरवर्ड में अवेलेबल नहीं। अगर फॉरवर्ड में मैंने आपके साथ एंटर किया है तो आई हैव टू कम टू यू एंड सेटल विद यू। आई कांट गो टू द ओपन मार्केट। क्लियर हुआ अभी जो आपका डाउट? नहीं, मैं it's not mandatory to go them, means जो loss, accounting loss है, pay or loss, I can do that and I can go to the market as well. इन फॉरवर्ड? Yes. हाँ, तो यू कैन गो टू द मार्केट। वो करने के लिए आपको बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी ना। वो लॉस आपको हिट लेना पड़ेगा ना। ऑप्शन में वो लॉस में हिट नहीं लूंगा, फिर जो लॉस में हिट लूंगा वो प्रीमियम का लूंगा। यहाँ पे वो लॉस फॉरवर्ड में उससे ज्यादा भी हो सकता है। दीपक डिफरेंस है कि ऑप्शन में आपको स्टार्टिंग से पता है यार मेरा मैक्सिमम लॉस तो जो मैंने प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा अगर लॉस हुआ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाऊंगा और बोलूंगा भैया मैंने आपको 5,000 का प्रीमियम दिया था, बट मेरी गाड़ी में 50,000 का डैमेज होगा, तो आप उसको ठीक करा के दो मुझे। बट इन फॉरवर्ड यू डोंट नो कितने का लॉस हो जाएगा। जितने का भी लॉस होगा आपको बेयर करके ही ओपन मार्केट में जाना पड़ेगा। विच मीन्स आपके लिए ओपन मार्केट और बैंक में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, तो आप बैंक ही सेटल करते हो फिर हमेशा, क्योंकि उतना लॉस तो आप बैंक को दे ही रहे हो ना।
Okay. One more question. ये options contract में there is a particular maturity date or it is for a period? जो हमने ऑप्शन आज पर डिस्कस करे उसमें मेच्योरिटी डेट होती है. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो हम बाद में देखेंगे, बट आज जो हमने करा उसमें मेच्योरिटी डेट होती है. टू आंसर योर क्वेश्चन, मेच्योरिटी डेट होती है. Okay. दीपक तुम्हारा वो क्लियर हुआ, स्टिल इन डाउट ऑन दैट? But the myth is in the market is that options are more riskier. देखो अभी हम रिस्क नहीं असेस कर रहे ना. मैंने आपको रिस्क बहुत अलग चीज है, बिकॉज ऑप्शंस इज अ डिफरेंट बॉल गेम vis-a-vis फॉरवर्ड. मैं अभी सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने बोला कि ऑप्शन में मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है. अगर मैं बायर ऑफ द ऑप्शन हूँ, मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है. मेरे को प्रीमियम से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता. इस वाले एग्जांपल में देखते हैं ना. सो जैसे अभी जो ये जो हमने एग्जांपल किया उसमें मान लो मार्केट 65 की जगह 20 चली जाती है. ठीक है, सॉरी 20 नहीं, सॉरी, हाँ मेरे को ये वाला साइड दिखाना है. चलो मार्केट मान लो 100 चली जाती है. ठीक है, अब मैं ओपन, आई विल नॉट यूज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो मुझे जो प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, वो 25 रुपीज का होगा पर डॉलर. सॉरी 30 रुपीज का होगा. और मुझे जो लॉस होगा प्रीमियम का वो 2 रुपीज होगा. तो नेट मुझे 28 रुपीज तो प्रॉफिट में हूं मैं. दीपक, यू नीड टिल दिस पॉइंट? Yes. यानी आप ये 28 रुपीज को पॉकेट कर लोगे, एक्स्ट्रा 28 रुपीज को पॉकेट कर. बट अगर यही मैंने फॉरवर्ड किया होता तो 30 रुपीज में पॉकेट नहीं कर पाता, मुझे ये हिट लेना पड़ता. क्योंकि जो डॉलर में 100 रुपए का ओपन मार्केट में बेच सकता हूं वो मुझे 70 का ही बेचना पड़ेगा. ये पीस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव. we'll discuss that tomorrow कि रिस्क उसमें ज्यादा because there are different school of thoughts around those pieces. इतना आसान नहीं है डेरिवेटिव्स. इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस. सो इसमें काफी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है. सो रिस्क में भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है कि फॉरवर्ड रिस्की है कि ऑप्शन रिस्की है, वो सब कल बात करेंगे. बट बिफोर आई गो टू द रिस्क पार्ट, आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि आपको पे ऑफ समझ आ जाए कि हाँ, कि पे ऑफ किस में लिमिटेड है, विच इज बायर ऑफ द ऑप्शन के लिए उससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता. और जो फॉरवर्ड वाली साइड है उसमें मेरे को ज्यादा लॉस हो सकता है. बट ये जो एडवांटेज है, एडवांटेज फ्री नहीं आता, इसकी एक कॉस्ट होती है जो आपको बियर करनी पड़ती है. ठीक है, सो विल पार्क दैट रिस्क वाला पीस. अगर इफ योर क्वेश्चन इज ऑन द रिस्क, विल कम टू दैट, विल टेक दैट टुमारो. मैं कल कुछ एक और 2-3 चीजें कराऊंगा वहां पर रिस्क का, फिर देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू लुक एट द रिस्क साइड. बट इसमें पे ऑफ साइड पे कुछ डाउट है तो बताओ. दीपक? No. ठीक है, It's anybody as a else any other doubt? catastrophic events, though, it's rarest of rare. It happens. What rare of rare? What is rare? This pay of what you are showing, it will go to 30 or it will go to 100 or 90 and all. नहीं, कोई रेयर नहीं है. सो इसको मैंने रियलिस्टिक एग्जांपल में डालूंगा तो कोई रियल नहीं है ये. सो लेट्स अज्यूम ये $1,000 नहीं है, ये $1 बिलियन है. ये तो बहुत कॉमन ट्रांजेक्शन होती है हमारे लिए. सो ये $1 बिलियन है और एक्सचेंज रेट आपने 70 एंटर किया और अब मेरे को 70.8 हो गया. 80 पैसा पर डॉलर है ये 1 बिलियन में. सोच लो कितना कंपनी का मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगा.
Yeah, that's okay. No, I'm saying that's 30. The dollar will go to 30 and dollar will go to 90. हाँ तो वो कि मैंने That's बोला all depends upon $1000 कि क्या उसका फॉरवर्ड का नोशनल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना है. It's all depends upon that. What's the volume it has. Even it's 80 पैसा is far बहुत बड़ी चीज है. Even 10 पैसा 5 पैसा 5 basis point 2 basis point is it matters. तो बस it is not the size of the movement, correct? And we are not discussing कि 2 रुपए मूव करेगा तो ये अच्छा है या 50 पैसा मूव करेगा तो अच्छा है कि 2 पैसा मूव करेगा तो अच्छा है. We are not discussing that part. What we are discussing कि अगर मूव करेगा तो क्या हो सकता है. And that's why I take a simple example कि 70 75 चले जाते हैं या 75 से 100 चले जाते हैं. आज taking these पैसा examples. So the assessment, be it a forward and option, remains is independent of आप कोई भी वैल्यू डाल दो. वैल्यू मींस मेरा मतलब whether you take a small pips or a basis points or whether you take these big figures, rounded big figures the way I've taken this doesn't make a difference. So from a conceptual perspective still remains the same. कोई डाउट है इसमें पे ऑफ में before I close this, दीपक? इस पार्ट को मैं लूंगा कल. No. Anybody else, any other doubt? I have a concern. Not regarding this topic. You can close this. Okay, the class on the last Sunday class, the recording was not there, and I wanted to know which topic was done. I think टॉपिक तो फोरकास्टिंग ही डिस्कस किया था हमने. फोरकास्टिंग में हमने आई थिंक वर्किंग कैपिटल और टैक्स किया था. ठीक है. एंड हैविंग सेड वर्किंग दिस, कैपिटल एंड टैक्स तो पहले हुआ था ना. सॉरी जब वो कैश फ्लो के लिए ये डेट लास्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है ये वाला किए थे हमने स्लाइड्स के. क्योंकि ईपीएस डीपीएस डिस्कस हुआ था ऑन सैटरडे. ये कैश फ्लोज किए होंगे हमने, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश फ्लो, बैलेंस शीट आइटम्स यहाँ से किया था सर. I want to have that class again because I was not there. कोई बात नहीं. सो वो रिकॉर्डिंग आया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा नहीं. सो आई विल टेल दामनी टू गेट दैट अपलोडेड. अगर नहीं हो 3-4 दिन हो चुके हैं. I have been asking but she is not responding, so I think this might not be there. ठीक है. तो अगर नहीं होगा तो मैं वो क्लैरिफाई कर दूंगा. That's not a problem. So but my understanding is I think कुछ IT issue है. That's not for your batch. Other batches कभी अभी अपलोड नहीं हो पाता. That's what I understand. So let's see. Okay, I'll ask again and check. Yeah. ठीक है. ठीक है. Any other question, guys? ठीक है. So in case no, we'll stop here and probably जो next part है इसका we'll continue tomorrow. ठीक है. चलिए. Thanks. Bye. We'll connect tomorrow. निशन सर, हाँ सुभाष. सर इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या रिस्क है? हाँ वो करेंगे ना कल डिस्कस. How does it matter क्या है फिर? You will not be deciding correct कि attend करना है नहीं करना उससे कि क्या है उससे. Is that the reason why you're asking this? Then I will tell you. But क्या है अगर आपको क्लास अटेंड करनी है चाहे whether I discuss A or whether I discuss B, you still attend, correct? फिर how does it matter? The reason I'm not telling you, I don't want you to read that because वो जिस तरीके से गूगल पे या बाहर लिखा हुआ है वो मैं नहीं चाहता वैसे समझो. Because then it will be very practically impossible for me to undo that जो चीज आप पढ़ लोगे वहां पे and explain that piece. इसलिए मैं वो piece आपको नहीं बता रहा हूँ अभी क्या है. To explain in a different way जिससे आसानी से आपको समझ आ जाए. That's the only reason why I don't want to tell कि क्या टॉपिक कल हम करेंगे. But ऑप्शन का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें ऑफ कोर्स रिस्क भी कवर हो जाए. ठीक है. चलिए. We'll connect tomorrow. Bye.